Let's start with quadratics. Okay, कुछ basic. Let's have a look at some basic things for quadratics. Quadratics की एक form is completing the square form. Is that right? If we are provided with 2x square plus 8x minus 7 and we are asked to complete the square. So the first thing that we do is take 2 common, x square plus 8x, sorry, plus 4x minus 7 is a spectator. उसको common लेना जरूरी होता है depending on the final form that the question is asked you in. उसके बाद x plus x square plus 4x. If x square is a square and 4x is 2ab, then b is 2. b का square add भी करते हैं, b का square subtract भी करते हैं, and we are left with minus 7. 2x plus 2 whole square minus 4 and then minus 7. Y is equals to 2 bracket x plus 2 whole square minus 8 minus 7, and this ends up being 2 bracket x plus 2 whole square minus 50. Once we have the quadratic in the completed square form, what is the advantage of getting a quadratic in the completed square form? Let me write it in the general form: y equals to x minus h whole square plus 50. Okay. Once we have it in the completed square form, बिल्कुल फर्स्ट थिंग तो हमें पता चल जाता है शेप ऑफ द कर्व. कैसे पता चलता है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द कर्व? हैप्पी फेस और सैड फेस से फेस पॉजिटिव, इट इज अ हैप्पी फेस. हैप्पी फेस का क्या मतलब है? इट इज अ या कर्व इज अ minimum. If a is negative, what do we say? Curve is a maximum. Sad phase जिसको हम कहते हैं. Either ways, what is the vertex? What is the vertex? It is h comma k. ठीक हो गया? So this is the advantage of getting a quadratic in a complete form. We know the vertex, but further when functions domain or range में भी हमें help होती है. Another thing is that quadratic, once it is written in the factorized form, x minus 7 and x plus 1. Okay, इसमें भी हम क्या देख सकते हैं? The coefficient, अगर इस form में given है k, if the coefficient of x square is positive, simply say in this case if I'll say if k is positive, तो क्या होगा? हमारे पास जनरली हैप्पी फेस होगा. इट विल बी अ मिनिमम कर्व. इस क्वाड्रेटिक की फैक्टराइज्ड फॉर्म से व्हाट डेटा कैन बी एक्सट्रैक्ट इजीली, व्हिच वी इवेंचुअली डू इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज एज वेल. से एक्स इंटरसेप्ट आसानी से आ जाते हैं. y की जगह 0 रखो, k भी उधर डिवाइड होके यू आर लेफ्ट विद 0, and the two x intercepts are 7 and -1. So the graph cuts at 7 comma 0 and -1 comma 0. Obviously you can find the vertex because the quadratic curve is symmetrical. Vertex फिर exactly इन दोनों के बीच में होगा. Can you tell me where the vertex will be? X coordinate of vertex is 7 plus -1 divided by 2. So what is that? 3. Is that right? X 3 है, x को 3 plug in करेंगे तो we will eventually get y from the equation. ठीक है? So this is the, we know that the quadratic curve is symmetrical. Is that right? Okay, so we know that the quadratic curve is symmetrical. So once, for example, if I have a happy face and I have y is equals to, same example ले लेते हैं, x minus 7, k को for example 1 रख, and x plus 1. What are your y intercept? Oh, sorry, x intercepts. What are your x intercepts? -1 and 7, right? यहाँ पे हमें पता है -1 पे कट कर रहा है. यहाँ पे we know it is cutting at 7. Is that right? Curve is symmetrical. So if I were to find the vertex using these intercepts, I'll say that vertex will be exactly in between the -1 or 7 का middle निकाल लेते हैं. We add them up when we divide by 2. So x coordinate vertex का जाता है 3. Now I plug this 3 in the original equation and I will get my y from there. Is this clear?
इससे भी हम ये वाली चीज निकाल सकते हैं. Is clear? Now the next thing is quadratic inequalities. Quadratic inequalities कैसे solve करते हैं? For example, if I have x plus 3, सबसे पहले तो उसको factorized form में ले जाते हैं. x minus 5 is greater than 0. If I have a quadratic inequality which is in the factorized form, that's very easy to find. सबसे पहला काम क्या करते हैं? First step is sketch the shape. And how do we sketch the shape? वो x square का coefficient, if it is positive, it will be a happy face. ठीक है? So let's do this example. So I know that it will be a happy face. This is the first thing that I've done. The next thing we do is find critical points. And how do we find critical points? उसको 0 रख देते हैं. Remember, the question is asking ये पूरा less than 0 कब है? Or the question is asking ये, sorry, the entire thing greater than 0 कब है? Where, yeah, when is this entire thing positive? Is that right? हम पहले निकालते हैं equals to 0, which is called the critical points, -3 and 5, right? Is that right? Where will -3 be? यहाँ पे -3 and it will be a 5 over here. Now what are we searching for? The third and the last step, that is trace the solution. How do we trace the solution? The question was asking greater than 0. It is greater than 0 above the x-axis. So once I trace the solution, this is the region where it is greater than 0. And this is the region where it is greater than 0. Now what are the values of x over here? Here it is less than -3 and here it is greater than 5. So you'll get a split solution for this one. X is less than -3 and x is greater than 5. That is how we solve quadratic inequalities. कोई query यहाँ तक regarding quadratics? सही है. Another thing that we do in quadratics is quadratics in disguise. सही है. How do we do that? Quadratics in disguise. For example, if I have c to the power 4 plus 7c square, yeah, minus 7c square plus 10 is equals to 0. Now I see it is a 3-term equation. Yes, it is not a quadratic equation, but there are only 2 variable containing terms. And those 2 terms में जो variable है, one is the square of the other. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो basic वाला है c square, इसको हम u ले लेते हैं for example. So this automatically becomes u square minus 7u plus 10. Can you solve this and tell me the value of u? क्या आएगी हमारे पास u square, पर we can solve this using a quadratic formula as well. Middle term breaking, कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई limitation नहीं है. Now there is u minus 5, u minus 2 is 0, u is 5 or u is 2. Do not forget in the very end you need to find the original value. अगर c square 5 है तो c will be plus minus under root of 5. Or if c square is 2, then c will be plus minus under root of 2. ठीक है. So technically we'll end up getting 4 values of c. कभी 4 आते हैं, कभी 1 आती है, कभी ऐसी आती है, इससे कोई further solution नहीं निकलता. So not any particular route for the number of solutions, but how do we identify that it's a quadratics in disguise? The variable containing terms, जिसमें एक term is a square of the other, that is called the quadratics in disguise. Basic वाले को हम कोई भी एक variable बना लेते हैं, so automatically the other one is a square of the other. यहाँ तक clear है? So this is called quadratics in disguise. Then comes in the concept of discriminant. Yes, what is the concept of discriminant?
It tells us the nature of roots. और से quadratic formula देखो, ax square plus bx plus c is 0. So x is minus b plus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2. Is that right? और देखो अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है विच इज बी स्क्वायर minus 4ac is greater than 0. So what can I say about the nature of the root or the final number of roots? नहीं, रूट पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, रूट तो कुछ भी आ सकती है. If अंडर रूट के अंदर if I get any positive value, तो फाइनली जो दो आंसर्स होंगे दोज टू आंसर्स विल बी डिफरेंट, दो अलग अलग होंगे. क्यों? क्योंकि रूट का जब निकालूंगा तो ऐड वाली लूंगा ना, एक सबट्रैक्ट करूंगा एंड प्रोवाइड द फैक्ट दैट माइनस बी अपॉन 2 है तो एज इट इज है. एक चीज एक ही वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, द सेम वैल्यू आर सबट्रैक्टिंग, सो यू आर बाउंड टू गेट टू डिफरेंट आंसर्स. सो इसके लिए हम क्या कहते हैं, वी हैव टू, हम कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. सही है. Then for example b square minus 4ac is equals to 0 आ जाता है. तो what can I say about the nature of the root? Two real and equal roots. क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 आ जाएगा तो फाइनल आंसर ऑब्वियसली इसी का बता रहा हूँ. फॉर एनी क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ रूट का बता रहा हूँ, अगर अंडर रूट के अंदर 0 आ जाए फाइनल आंसर क्वाड्रेटिक का कितना आएगा? एक ही आएगा. एक ही आ रहा है तो व्हाट डू वी कॉल इट? टू रियल एंड इक्वल रूट्स या टू रूट्स आर सेम. इज दिस क्लियर और नॉट? एंड इफ वी नो, हाँ, नहीं नहीं, साइन डिफरेंट का मतलब तो दो अलग रूट्स है, एक ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक ही आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू 2 आएगी. एंड द थर्ड इज इफ वी नो दैट रूट्स आर नॉट रियल, then what do we say? That b square minus 4ac is less than 0. And what अगर roots are real आएगा सिर्फ, that is all that we know, then b square minus 4ac is greater than or equal to 0. Is this clear? अच्छा, फिर अगर हम simultaneously solving two equations, what does it tell us? क्या मिलता है? When we solve two equations simultaneously, what do we get? जरूरी नहीं है दो हो, एक भी हो सकती है. क्या देता है हमें? Provides the point या points plural भी हो सकता है of intersection. Is that right? सही है. तो मैं कहूँ after solving the, या while solving, that's the right word. सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन आती है विच इज अ क्वाड्रेटिक, इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक, और मैं कहूँ द line is tangent to the curve, then what can I say about the discriminant? B square minus 4ac equal to 0. और मैं कहूँ cuts through the curve, then and if I say does not meet the curve, B square minus 4ac is less than 0. Is this clear?